Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MTCAT, and today I am going to discuss a very important and interesting topic, that is neuron and its types. So let's move to the classboard. Now dear students, the types of neurons. An important conceptual topic is this, the types of neurons. तो पहले हम बात करेंगे इनकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन की, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. तो फंक्शन की बेसिस के ऊपर डियर स्टूडेंट्स तीन मेजर क्लासेस हैं, तीन मेजर टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की. So this is an interneuron. Here is another interneuron. And here is its cell body and axon. Or these are the nasal granules. Nasal granules. Clear? Or now going to label it. So these are the dendrites. Dendrites. इसके भी और इसके भी. यहाँ पर जो डेंड्राइट्स है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है, और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर बहुत प्रोफ्यूजली ब्रांच डेंड्राइट्स नहीं है. और दिस इज द सेल बॉडी. ये रही सेल बॉडी और इसकी ये सेल बॉडी. क्लियर? और दिस इज द एक्सॉन. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नोट कर लीजिए कि एक्सॉन्स जो हैं और डेंड्राइट्स, ये दो ही तो साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं जो कि सेल बॉडी से निकल रहे होते हैं. तो लेकिन यहाँ पर जो स्पाइनी लुक है, द स्पाइनी लुक, द डेंड्राइट्स दे गिव स्पाइनी लुक. याद रखिएगा, कौन? द डेंड्राइट्स. जबकि एक्सॉन की स्पाइनी लुक नहीं. स्पाइनी मतलब ऐसे कांटे जैसे, देखे कांटे निकले हुए साइडों पे. सो कांटे निकले हुए साइडों पे. सो दिस स्पाइनी लुक इज ऑफ ड्यू टू द डेंड्राइट्स. यहां पर देखें, सो यहां पर बहुत ही प्रोफ्यूज ब्रांचिंग है. इसके अंदर तो प्रोफ्यूज ब्रांचिंग डेंड्राइट्स किस तरह से है, जैसे कि दरख्त, ये नीचे स्टेम उसकी और ऊपर दरख्त. सो यहां पर डेंड्राइट्स दे आर लाइक अ ट्री. वैसे जो डेंड्राइट्स है, ये दरख्त की ही मान लीजिए, इसी से ही एक सिनोनिम ये लिया गया. और दिस आर द साइनेप्टिक नोब्स. साइनेप्टिक नोब्स जो कि आगे साइनेप्स बनाएंगी. ये दोनों ही जो न्यूरॉन्स हैं, दे आर कॉल्ड द इंटरन्यूरॉन्स. दिस इज ए and this is B, and both of these are
both of these are interneurons or associative neurons, or they are also called as relay neurons. And these are present in the central nervous system. These are present in the central nervous system. इनका काम क्या है? What do they do? So these two neurons, they receive impulses from sensory neurons and interpret उसको इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड सेंड मैसेजेस वाया मोटर न्यूरॉन्स टू इफेक्टर्स. सो दैट इज देयर मेजर फंक्शन. तो मैसेज रिसीव भी करेंगे सेंसरी न्यूरॉन से, उसको इंटरप्रेट करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, उनका क्या करना है, और उसके बाद फिर उनको आगे मैसेज भेजेंगे भी इफेक्टर्स की तरफ ताकि कोई रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकें बाय मोटर न्यूरॉन्स. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इंटर एसोसिएटिव और रिले न्यूरॉन्स. सो दे आर प्रेजेंट इन द सीएनएस, याद रखिएगा. दो अब थर्ड, यहां पर ये तो बेसिक ए और बी टाइप्स हो गई, ये सिर्फ इंटर न्यूरॉन्स. अब हम बात करेंगे एक मोटर न्यूरॉन की. सो दिस इज अ मोटर न्यूरॉन. Synaptic knobs, and here is the cell body, and the nasal granules जो कि डेंड्राइट्स में भी हैं. ठीक है, इसलिए मैं इसमें शो कर रहा हूँ डेंड्राइट्स के अंदर. एंड here is the myelin sheath. So they are myelinated. They are myelinated. And the Schwann cells. Details हम डिस्कस कर चुके. So these are the dendrites. Dendrites. This is the cell body. Or this is the axon. Myelin sheath, which is made up of lipids. Schwann cell here, and the nodes of Ranvier. Nodes of Ranvier here, and the direction of nerve impulse is this, towards the cell body, so dendrites. And these are the nasal granules. Which are a group of ribosomes associated with Golgi apparatus and rough endoplasmic reticulum. And this is
a typical motor neuron. This is motor neuron. और motor neuron का क्या काम? जी dear students, so it carry impulse, मतलब कि nerve impulse from CNS, central nervous system, to effectors, effectors तक लेकर के जाता है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं the neuron which carry impulses or nerve impulses or messages away from CNS. So that is a typical motor neuron. And now the third category is the sensory neuron. So this is a sensory neuron attached. So these are the receptor cells. और उसके आगे this is towards the spinal cord, cell body, and nasal granules, सिर्फ cell body के अंदर। और उसके बाद myelination is here. So over here, the myelin sheath. These are the Schwann cells. Now, this is the receptor, or this branch is called the peripheral branch. Peripheral branch, या इसका दूसरा नाम dendron, and this one is the central branch, or which is called axon. Clear? And this one is the cell body. This is axon hillock. This is the Schwann cell, and the nodes of Ranvier. Clear? लेकिन यहाँ पर कोई nasal granule नहीं है इस प्रोसेस के अंदर. And these are the synaptic knobs. ये भी synaptic knob है. Synaptic knob and the synaptic knob. अब dear students, this is a sensory neuron. This is a sensory
न्यूरॉन टिपिकल सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है? इट कैरी impulse towards CNS or from receptors to CNS। तो उसका काम है मैसेज पहुंचाना, और इसमें फ्लो ऑफ इंपल्स डायरेक्शन इस तरह से है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूरॉन को जरा गौर से देखिए। ये ऐसा दिखता है कि जैसे ये एक ही फाइबर है और इसकी साइड पे सेल बॉडी, इसकी सेल बॉडी सेंटर में नहीं है, साइड पे है, और यहां से ये एक्सॉन हिलक है। एक्सॉन हिलक कहते हैं द पॉइंट फ्रॉम वेयर द प्रोसेसेस इमर्ज, जहां से साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस इमर्ज करते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं एक्सॉन हिलक। सेल बॉडी इसकी दैट इज नॉट सेंट्रल नहीं है, इट्स ऑन साइड, एक साइड पे मौजूद है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरा एक ही सिंगल फाइबर है, लगता है ऐसे है। तो ये स्ट्रक्चरली याद रखिएगा, इस न्यूरॉन का जो फाइबर है सिंगल, इट इज स्ट्रक्चरली लाइक एक्सॉन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये जो फाइबर है दिखने में ऐसा लगता है जैसे एक्सॉन है, लेकिन फंक्शनली इसको देखा जाए तो ये दो तरह से डिवाइड होता है। अब ये रिसेप्टर से मैसेज यहां पर किसकी तरफ आ रहा है? टुवर्ड द सेल बॉडी। तो फंक्शन के एतबार से देखें तो ऐसा प्रोसेस जो सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेकर आए वो क्या कहलाता है? डेंड्राइट। लेकिन चूंकि कि सिंगल फाइबर है तो उससे हम क्या कहेंगे? डेंड्रॉन। हमने क्या कहा था? इफ इट इज अ सिंगल फाइबर इट इज कॉल्ड डेंड्रॉन, और ये माइलिनेटेड भी है, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम पेरिफेरल ब्रांच। पेरिफेरल ब्रांच इसलिए क्योंकि ये लोकेटेड है अवे फ्रॉम द सेंटर, ये स्पाइनल कॉर्ड से थोड़ा हटके है, तो ये रिसेप्टर्स से मैसेज लेकर आ रहा है टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। इसके आगे यहां पर स्पाइनल कॉर्ड है। मजीद इसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा इसमें रिफ्लेक्स सेक्शन में। तो यहां से नीचे की तरफ, तो जो ब्रांच, द ब्रांच बिटवीन द रिसेप्टर एंड डोर्सल रूट गैंग्लिया, DRG, उसे कहते हैं पेरिफेरल ब्रांच। डोर्सल रूट गैंग्लिया क्या है? रिफ्लेक्स सेक्शन में इंशाल्लाह मैं मजीद क्लैरिफाई करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना बताता चलूं कि स्पाइनल कॉर्ड का जो सा डोर्सल रूट होता है उसमें कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। और सेंसरी न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज होती हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से बाहर इकट्ठी होकर के एक जगह पे एक स्ट्रक्चर बना देती हैं, उसे कहते हैं गैंग्लिया। चूंकि वो डोर्सल रूट में लोकेटेड है इसलिए उसे कहते हैं डोर्सल रूट गैंग्लिया। तो डोर्सल रूट गैंग्लिया और रिसेप्टर के दरमियान, रिसेप्टर और डोर्सल रूट गैंग्लिया के दरमियान में जो बॉडी है, जो फाइबर है, उसे हम कहते हैं पेरिफेरल ब्रांच। और जो सेल बॉडी और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में है उसे हम कहते हैं सेंट्रल ब्रांच। सो द प्रोसेस बिटवीन द सेल बॉडी मतलब कि यहां पर सेल बॉडी को क्या कह रहे हैं? डोर्सल रूट गैंग्लिया एंड स्पाइनल कॉर्ड, इज कॉल्ड द सेंट्रल ब्रांच। और इसका फंक्शन किस तरह से है? ये सेल बॉडी से अवे मैसेज लेके जा रहा है, तो जो सेल बॉडी से अवे मैसेज लेके जाए वो कौन सा फाइबर होता है? एक्सॉन होता है। तो फंक्शनली ये एक्सॉन है और फंक्शनली ये डेंड्रॉन है, क्योंकि सिंगल फाइबर है। और देखिए इसमें कोई नीजल ग्रेन्यूल नहीं है, ये एब्सेंट है जो मैंने कहा था आपसे, ठीक है। और लेकिन हम इसको इस एतबार से देखें, अगर स्ट्रक्चरली देखें तो स्ट्रक्चरली इट लुक्स लाइक एक्सॉन, स्ट्रक्चरली एक्सॉन की तरह का ही दिख रहा है। सो दिस इज अ सेंसरी, टिपिकल सेंसरी न्यूरॉन। इसकी सेल बॉडी साइड पे है, सेंटर में नहीं है। यहां पे भी देखें, यहां पर भी देखें, यहां पे देखें, सेंटर में, लेकिन ये एक साइड पे निकली हुई है, जिसकी वजह से ये एग्रीगेट होकर के क्या बनाती है? डोर्सल रूट गैंग्लिया आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक बहुत अहम और आखिरी बात इससे रिलेटेड, एक्सॉन से रिलेटेड,
कि जो नर्व इंपल्स की स्पीड है, द स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स depends upon three things, 3 चीजों पे मुश्तमिल है। नंबर 1, डायमीटर ऑफ एक्सॉन, जितना बड़ा डायमीटर होगा उतनी ज्यादा तेजी से गुजर जाएगी नर्व इंपल्स। नंबर 2 इज द लेंथ ऑफ एक्सॉन, और तीसरा, द थर्ड फैक्टर, which is the myelination. क्लियर? ये किस तरह से इफेक्ट करेंगे? डायमीटर अगर हो इंक्रीज्ड, इस साइन का मतलब इंक्रीज्ड डायमीटर, सो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नर्व इंपल्स, द स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है, डायमीटर ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा होगी, लेंथ जितनी ज्यादा होगी इंक्रीज्ड, सो इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। और माइलिनेशन होगी तो माइलिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। माइलिनेटेड जो एक्सॉन्स होते हैं उनकी वहां पर नर्व इंपल्स की स्पीड ज्यादा होती है, एंड इट इज 20 times more than non-myelinated न्यूरॉन्स। उनकी निस्बत ये 20 गुना ज्यादा, 20 times more फास्टेस्ट कंडक्शन करती है ये माइलिनेशन। जी टू डियर स्टूडेंट्स, होपफुली अब आप आसानी के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन इंटरन्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स एंड द सेंसरी न्यूरॉन्स। और डियर स्टूडेंट्स, द बेसिक पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स, जो 3 बेसिक पार्ट्स हमने डिस्कस किए, द डेंड्राइट्स, द सेल बॉडी एंड द एक्सॉन, होपफुली यू आर वेरी मच क्लेरिफाई अबाउट देम। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लेरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक। और अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपको आंसर करेंगे जल्द से जल्द। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।